Excellent. Recording in progress. मेरे ख्याल है कि मेरी वीडियो नहीं आ रही है। सर आई कैन सी अब स्क्रीन आपकी दिख रही है विद द जूम ऐप। आप मैं इसको मेरे ख्याल से दो जूम खुले हुए थे, तो मैं एक को क्लोज करूंगा तो हाँ शायद अभी। हाँ ट्राई कर लें। हाँ हाँ अब वीडियो भी आ रही है। एक्सलेंट एक्सलेंट। हाँ, सर ये बात हुई है सर, वो आ रहे हैं। सही है सही है सही है। आई थिंक विल वकास व्हाट वील डू इज कि वी जस्ट वेट अ कपल ऑफ मोर मिनट्स और फिर हम लोग शुरू कर देंगे बिकॉज इट्स 9:08 हो गए हैं। तो ताकि फिर मैं एक ऑफिशियल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू इरम फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर अतीक हमारे पास जो जैसे आपको कहा था कि स्टूडेंट्स मोस्टली डेंटिस्ट और जी सर। फैकल्टी मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में एंड द फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं। सर। मास्टर्स है कुछ के पास एमफिल भी है। सर। और ये कि मोस्टली एकेडमिया में भी और रिसर्च दोनों में इन्वॉल्व है। सर। एंड होपफुली हमारा एम टिश्यू इंजीनियरिंग पढ़ाने का ये है कि this is a cutting edge science which is advancing at the speed of light, I think. बिल्कुल। काफी तेजी से इसमें से नैनो टेक्नोलॉजी हैज चेंज द लैंडस्केप ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग ताकि इन बिल्कुल। लोगों को इससे एक्सपोजर हो और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकें एंड ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस देम to the people who are यस। doing research in this field within Pakistan. बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही सर। चलें सही है सर। बिस्मिल्लाह हम करते हैं शुरू करते हैं। सही है सर। लेट्स जस्ट स्टार्ट आई थिंक सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Welcome everybody for the session on this is let me introduce first of all हमारे आज guest speaker हैं Dr. Mohammad Atiq Rahman. He is I have become acquainted with him fairly recently, but mashallah he has a number of accolades associated with him. He has a PhD from Erlangen, Nuremberg, Germany, from the University of Erlangen, and he is a biomaterials specialist. He is currently working in Institute of Space and Technology in Islamabad. He is an assistant professor, and he's looking after the biomaterials. What attracted me most is his contributions to science and tissue engineering. Most of all, some he has जो इनकी affiliation है with his supervisor, and he has a big name in biomaterials जिसके बारे में ये और भी बताएंगे. And I hope कि आप लोग इस सेशन से you can learn something और मकसद ये होता है कि to expose you with different speakers. Dr. Atiq's पाकिस्तान में ही है and you can then imagine कि within that setting कि he has still been able to produce papers and scientific research. So without further ado, Dr. Atiq, the floor is all yours and Bismillah. मैं अपना म्यूट कर लेता हूँ with myself. Thank you, sir, for the introduction, and I'm really thankful for having the opportunity to speak with, especially the practicing dentist. And the story cut short is, I have done my PhD, as Sir Qasim told, that from the University of Erlangen, Nuremberg,
back in 2018 with Professor Aldo Buccaccini. Is probably the top 10 biomaterial scientist in the world. And basically, my research and motivation started from him. And I just want to develop some materials that we can take to the clinic. And whatever I am speaking about today is about the translational science as well, because we are really focusing and we are really trying hard in Pakistan to translate that we have whatever we have developed in our laboratory to the clinic as well. Or just giving a brief overview of my research that we have been doing in the area of biomaterial is that we are working on the regenerative medicine in particular, and we have a combination of 3D printing, additive manufacturing, and this regenerative science together to develop skin patches, to develop scaffolds for the bone and as well as for the dental bone as well, as a regenerative regenerative patches or the regenerative template that can later on help in the earlier or the faster healing of the bone and the skin as well. So widely distributed around the biomaterials. I will be speaking about the coatings on the orthopedic and dental implant as well. We have a very good research group within my group working on this domain. We have developed very good coatings on the implant, for example, as well as dental braces, nitinol wires as well, to help and to prevent the toxicity, to create very good regeneration potential there. We have developed some 3D scaffolds as well. I will be speaking about them. And then carrying on this research to the targeted drug delivery systems as well, because nowadays the oral drug administration has certain disadvantages, and we are really focusing on delivering the drug at the site of injury or at the site where we really need that drug to be there. So this is the broader classification that I have been working on. Few of my publication, as you can see, in various journals of biomaterials and dental materials as well. Especially in Pakistan and around the globe, that we see a number of the people suffer from the burn injuries. सॉरी डॉक्टर की And आप इसको उस प्रेजेंटेशन मोड में कर दें तो सही हो जाएगा। हाँ हाँ सब बिल्कुल मैं कर देता हूँ। उसमें उसमें थोड़ा सा लैग आ रहा था, आओ अभी मेरे अच्छा ख्याल से ठीक है। हाँ, देख लीजिए अब आप अब 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 जैसा अभी कोशिश करते हैं कि अभी लैग नहीं आए। ठीक सब अच्छा। मेनली इन पाकिस्तान we have an issue that mortality rate in Pakistan in case of a burn, when the area of the burn is more than 50%, is higher than a 90%. So the chances for the survival is very minimum when we have a burn area of greater than 50%. There is a pressing need that we develop localized skin patches. I'm just speaking about the skin in initial, so that you know how to create that 3D templates that can later help in bone and the dental grafts as well. So I hope that this scheme of lecture will be useful for you people. So we focus on developing the artificial skin or the synthetic skin from the locally available substitutes, locally available materials in Pakistan. And we have developed these skin patches by using the additive manufacturing. So just giving you the basic concept of the tissue engineering is that we make a 3D template, and then we can load certain amount of cells into that 3D printed scaffold. So this is basically regeneration or the enhancement of the regeneration. So the aim here is not only provide a 3D template, but the opportunity to load certain type of cells. For example, we can load MSCs, mesenchymal stem cells, within these 3D printed scaffolds. So I have to go to the minimum or to minimize that presentation because there's a certain lag, so difficulty in slide changing. So
we are focusing on the natural herbs. There are many natural herbs available in Pakistan, and we have been using them. So, my aim is to use the active ingredient of these natural herbs and put it in these 3D printed scaffolds or the bone substitute as well as the skin substitutes, and then we can print them as per our requirement. We can really make a patient specific implants. And as you know that nowadays we know that WHO has declared a global threat that the immune system of a human body is becoming resistant to the particular set of antibiotics. So that's why there's a pressing need to develop the alternative strategies. So, keeping in view of these observations, we are focusing on the natural herbs and the metallic ions instead of using the traditional antibiotics. But we are really using the active ingredients because these natural herbs contain so many ingredients that are actually the raw, or they are less useful or may create some toxicity even to the live human cells. So we are trying to extract the active ingredients. Just for example, we have a henna. Mehndi, common in Pakistan, has an active ingredient of lawson. Lawson has naphthalene, which is highly oxidizing and can kill the bacteria. And in addition to that, we have work on the cloves. Cloves has an active ingredient of eugenol. So there are many we can name many natural herbs that have been used in biomaterials, and specifically extracting or just purchasing from the market that active ingredients and then putting into the biomaterials and getting a therapeutic effect, and even the synergistic therapeutic effect have also been achieved. Just to give an overview and the basics of the 3D printing, is that it is a layer by layer printing, very simple process. We just take a syringe that is very common, as shown in this image, and then we just give a command. Like we have a CAD model, 3D CAD model that we can give to the 3D printer, and then 3D printer can really print that shape. Even nowadays, there's an opportunity that we can take an X-ray of the human or the patient, and then this X-ray can be converted into the G codes, or depending upon the codes that the 3D printer accepts, it can translate that image into the code and can really print that substitute of a bone or a skin. So there is also that opportunity that to take the images and then give it to the 3D printer and really make these difficult shapes or difficult geometries that would not have been possible to be developed by using certain other techniques. So 3D printing is layer by layer process. We print one layer, then another, then another. So we can print 1 to 20 layers depending upon the requirement or the thickness of that patch required. And in that, we have to make an ink. We usually called it as bio ink. This is the first step in the 3D printing. And in that bio ink is actually a polymer, which is usually a biopolymer alginate. This is very common in 3D printing. In every sort of 3D printing, we see sodium alginate because this is ideal rheology or the viscosity for the 3D printing process. Usually we take 50% sodium alginate and we vary the remaining 50%. And then we tune the properties by using the remaining 50%, because if we reduce the sodium alginate further, then the 3D printing will become really difficult. So we make a stable ink by using that sodium alginate, and sodium alginate incorporated with some other polymers that can give you the various functionalities, and and loaded with some therapeutic ions or the drugs or the molecules that can really improve the biological functions that we really desire to get from that skin patch. So just giving a brief overview now, that we give a command to that 3D printer that you print 10 layers of this scaffold. It will make a porous scaffold, and then we really check
how much stiffness, what is the mechanical properties of that one. Additive manufacturing has the advantage specifically with the mechanical strength, because with other techniques we do not get a very good mechanical strength. In additive manufacturing parts or the components, we get a very good mechanical strength. Here are the few images that in the ABC you see. These are basically the scanning electron microscopy images. They show that you see that this is the solid region called as the strut region, and we have quite a homogeneous pores or a homogeneous porosity in that. And these are the big pores, these are the macro size pores, but we also see a micro size pores here. These are within these struts. So this porosity is really beneficial for the initial protein attachment and drug loading. So we print that scaffold but from the alginate and the carboxylated methylated cellulose, because CMCs are well known to improve the attachment of fibroblast cells, in that case of the skin, and we print them loaded with certain herb, for example, Lawson in that case, and then we see how it actually behaves. And we have loaded Lawson, which is basically a natural herb. And then we studied a release pattern here. As you can see, typically with a targeted drug delivery system, we want a three-stage release. In the initial stage, we really want a burst release because the first 6 hours of implantation are important, and the chances for the bacterial biofilm formation are really high in the first 6 hours. So that's why we have a burst release of the drug. In that case, this is Lawson. It can be some other herb as well, but we put a Lawson and then track that. Initially, we see a burst release, so it will prevent the chances for the biofilm formation. And the second stage you see is much like a regular release. So it is a linear release, and it is going to increase with the time. And then after certain period of time, we see a very slow release. So that's why it is very important that we have a release at every point above the minimum inhibitory concentration. Because if we have a lesser amount of the drug than the MIC, then there are chances for the bacterial prevalence in that implant or in the vicinity of the surgical intervention. So we keep that concentration intact. Obviously, there are many experiments involved to tune and achieve that drug release pattern and get it really that fine three-stage release, which is beneficial for the implantation. We can see here these scaffolds has a very nice zone of inhibition for both types of bacteria. We see Staph aureus and E. coli, so showing that these are actually the broad spectrum bacteria, and Lawson has a very good antibacterial effect against the gram-positive and the gram-negative bacteria. We see a very good zone of inhibition, and the images for the angiogenesis are also presented here. This is a very simple test. We take some fertilized egg at day 7 and implant our material. As you can see, a scaffold here. And after implantation, we close that egg again and incubate it in a clean environment for, let's say, 7 more days. And after 14 days, we again take out that egg and take the images. And as you see here, there are a number of the branches being formed. As you see, the number of branches of the new vessels has been formed. It means that material is promoting vascularization. This vascularization means regeneration. So actually, we are getting good regeneration potential from these 3D printed scaffolds intended for the wound healing application. And we have also used them in the sutures. We have also applied these sort of materials in bone, and we see a very good results even in a rat model and the rabbit model as well. I will show some results later on. And here you can see that it has promoted angiogenesis. It is antibacterial as well.
and it is also biocompatible. Not shown here, but they presented a very good results against the mesenchymal stem cells and the fibroblast cells over the culture of 1 week. These all experiments are done in my own lab here in the Institute of Space Technology, Islamabad. We have developed the 3D printer indigenously. These 3D bioprinters are the product of my own lab here. We have developed them to really make a cost-effective 3D printed skin patches. And we have already filed a case with the DRAP, and we are really trying to get that case done from the DRAP and take it to the clinic as well. These are some of the recipes that we have worked on. As you can see that we have mainly focused on natural herbs and natural polymers. This agarose is also a natural polymer and loaded with silver doped bioactive glasses. This idea of doping bioactive glasses came from the Professor Aldo. He works with the inventor of the bioblast, Laurie Hench, here at USA in University of Florida. They developed in 1969 a composition of bioglass that is really bioactive and heal the bone in, let's say, 3 to 4 weeks. And this is really a rapid healing process. And then later on, from 1969 till now, there are many compositions of bioglass has been explored. Several ions has been loaded. For example, in this paper, we loaded silver in the bioactive glasses. As you know, that silver can be toxic, so the aim was to put a really that amount that can kill the bacteria but can not harm the osteoblast or the fibroblast cell lines. So this was the aim here. Similarly, we have loaded this lotus bean gum. This is in Pakistan. There are many gums which are available at very, for example, very cheap rate. Tragasin gum. We have also used that. We have used guar gum as well. They are actually biocompatible and very cheap source. So that's why we can develop these skin patches in particular with aim of tissue engineering at a very low cost compared to the imported skin patches that are being used in Pakistan, for example, the Integra. Here is a interesting work on the guar gum that we have recently done by using the polysaccharide. This basically all are polysaccharide loaded with therapeutic ion. Over the last 6 to 7 years, I have seen that the combination of copper and silver together gives the best effect. This is like from the 7 years, we have tried many compositions, trial error approach. And after that, I concluded that real combination of copper and silver in bioglass, if we put copper and silver in bioglass, we get a maximum amount of angiogenesis, means good regeneration and vascularization, in addition to the strong resistance to the bacteria or the inhibition to the gram-positive and gram-negative bacteria. So this is just an overview of that work. This is like a design of the 3D printer locally developed here in my lab. And by using that 3D printer, we print multiple layers. As you see, the skin has the multiple layers. So we print multiple layers to mimic the structure of the skin. This is a real beauty of 3D printing, that we can really mimic the structure that is present in any organ. For example, we can really make the layers as in the liver. We can make the similar layers as in the skin. And similar is the case with the bone. So we can make these layers by using that additive manufacturing process and layer by layer printing. Here is this graphical representation of the work. As you can see here, these are really a porous, 3D porous network structure. And you see here quite a thick skin patch, and you can really bend that. It means that it is not going to break easily, and we can really apply on the surface of a skin. The main aim here is that we have a rescue service here in Pakistan, 1122. In Pakistan, most of the patients die at the site where there is an incidence or the accident of the burn because of the dehydration.
These are basically the materials which can absorb a lot of water. For example, they can absorb 5 times more water than their own weight. So it means 500% loading efficiency of the water. So if we want to save the life of the patient, the rescue person can just immerse in a normal saline and can put on the surface of a skin of a patient, and the chances for the mortality due to the dehydration will be mimicked, or the chances for the mortality because of dehydration will reduce. And then after few hours, there will be a release of the copper and silver together. They will not allow any bacterial growth around that wound, because whenever there is a wound, there's a chances that bacterial film will grow, and or the biofilm will grow. That silver and copper together will prevent that release. In addition to that, copper will provide angiogenic potential, means it will promote new vascularization. So in the tissue engineering, the basic concept is to combine the science of a materials and combine the science of the clinic to get the job done for the regeneration. For example, here we have a scaffold with the tunable composition of a bioactive glass. And if we can put certain cells in that, for example, if we can take a cells from the patient, fibroblast cells, and can put in that 3D printed scaffold, it will even promote the regeneration. So however, the printing with the cell is a bit trivial because we really need a clean environment, but it has been done in my lab, and the results are quite encouraging. And for example, if this skin patch can heal the rat in, let's say, 3 days, and if we put a cell, human cells, it can heal maybe in 3 days. So it has a higher I'm sorry, it has a higher efficiency when we put live human cells in that 3D printer and can make a scaffold from that. So just giving an overview of the work. And then we see here, this is called as ink fall-off test. In that we see that ink is stable or not. If ink is going to fall down during the printing, then we do not get a stable scaffold. So that's why it is very important to conduct that test. Very simple rheological test, because in 3D printing we are using an extrusion process. And in extrusion process, this is very important. When we apply a load onto the syringe, we get a very good thinning. For example, if we put any sort of material like a honey, if we put honey in the syringe and try to extrude, it will be very difficult. And then we put certain amount of oil with the honey, then it is easily extrudable. So that's what we want. That viscosity should be intermediate. It should not be highly viscous. It should not be too low viscous that it is even at a very low extrusion pressure that ink is going to fall down. So in bioprinting, the preparation of the ink is very important. And in case of the skin, we can prepare that ink quite easily. But however, the preparation of the ink for the bone or the dental grafts is quite trivial. I will speak about that also in the later stages of my talk today. Sir, I have a question. जी जी पूछें. सर बायोकम्पैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं इसमें? जी जी बायोकम्पैटिबिलिटी के इश्यूज होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें नेचुरल पॉलीमर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें ग्वार गम है, इसमें एल्जिनेट है, और अगर हम क्रॉस लिंकर जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से यूजुअली ये प्रॉब्लम होता है कि जब हमने एल्जिनेट को और ग्वार गम को आपस में क्रॉस लिंक किया है बाय यूजिंग द कैल्शियम क्लोराइड. If we have used a higher amount of a calcium chloride, these chloride ions are for sure toxic. So it is very important to use the minimum amount of a cross-linker. If we use the cross-linker more, we get a very good scaffolds, but we get compromised biocompatibility. So this has to be balanced out, the cross-linker. So we can use even nowadays there are plant-based cross-linkers available in the market. That, and chances for the toxicity are being reduced.
In that case, the result that I've just shown, they do not induce any toxicity to the fibroblast cells as well as primary mesenchymal stem cells. We have used primary mesenchymal stem cells. So if they are qualifying that test, it means they will show a very good results at later on, or even the clinical trials as well. So in my opinion, it is very important to just induce the composition of the ink that can really support the proliferation of the cells. If we use some sort of a toxic ions, then there are chances for the toxicity, but this can be easily controlled in 3D printing. And we can really help the growth of the tissues or the cells if we get a good composition control in that 3D printing materials. I hope I have answered the question. Continuing with Yes, sir. the, Thank you. these are actually the rheological result. I will not go into the details of that, maybe less relevant to you people, but just see the scanning electron microscopy images. There are white color small particles. These are actually the bioglass nanoparticles, or maybe the micron particles here. These are actually responsible for the antibacterial effect and the angiogenic effect. And we have a very good porosity in that also. We use a typical Fourier transform infrared analysis to confirm that we have a good cross-linking between the guar gum and the alginate. If there is a peak shift, it means the cross-linking is there. So it is also very important to study that. Then you see here, in my opinion, this is very interesting to see the release of the calcium ions. This is being done by using the inductively coupled optical emission spectrophotometers, ICP-OES, or mass spectroscopy technique here. It shows that there is a release of the calcium from the day 1 till to the 7 days. So it means that calcium is really helping in the regeneration as well as we have the release of the silver in that. So silver, calcium, and copper in combination gives a very good properties which can help in regeneration. For example, copper can create an angiogenic environment. Release of silver ions can give you the antibiotic effect. So this is basically a multiple functionalities we are getting from this scaffold. We are mimicking the structure of the skin by using the additive manufacturing. We are controlling the release of the ions. We are putting in various polymers together to get a very good biocompatibility and proliferation of the relevant cell lines. In that case, that is fibroblast cell lines. So this is a complete system, actually, not just one properties. And then very good mechanical properties as well. As you can see, we can really band that samples. We have checked the compressive strength. We have checked the tensile strength. And the results are very good. And we are also getting a degradation here. You can see here, these scaffolds around in 7 days, they're almost 70 to 80% degraded. So it means if you put on the skin in a 1 week, they will regenerate or the new skin will appear, and these scaffolds will just wash away and will be degraded. And we do not need to remove that artificial or the synthetic skin patches. These are degradable in nature. Controlled release. This is what we want even in the case of the bone regeneration. We will apply that concept, but in the case of the bone, this degradation rate has to be reduced. For example, the bone takes usually 4 to 6 weeks to regenerate. So we will apply the same knowledge here. We use the different materials to get the degradation rate control and get that material degraded in, let's say, in 6 weeks. So we can really control them by using the different polymers or even ceramics together. So printing of ceramics, for example, in that case, the bioactive glass is a ceramic and we have a polymer together, is a bit difficult, because when you have a different sort of materials, there are chances that these nanoparticles will clog in the syringe or will clog in that 3D printer nozzle. So we have to
be very careful about the viscosity step, and we have to control the viscosity. Again, these are the skin patches. We just compare Sir, that. sir, sorry, जी sorry, sir. जी जी जी, बताएं, कोई बात नहीं जी जी Sir, क्वेश्चन I have प्लीज another question, please. सर जी मैं जी ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आपने बताया कि पैचेस हम लगाते हैं, जी जी तो सर इस पे चेंजेस नहीं आते क्योंकि पेशेंट अगर ऑलरेडी उसको कोई और प्रॉब्लम है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, और हेल्थ इश्यूज हैं, तो क्या इसमें चेंजेस आएंगे या ये एक आइडियल उसके लिए है? देखिए, जो टेस्ट किए जाते हैं ना, मतलब अभी मैं तक ये पूछना हमने चाह रही हूँ कि एज, हेल्थ, ये सारी चीजें इस पे इफेक्ट करेंगी या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल इनका इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए तो अभी हम जब ये तो चीजें एक्सप्लोर होंगी जब क्लिनिकल ट्रायल्स पे जाएंगे। तो एनिमल ट्रायल भी जब किए हैं वो तो हमने देखे आइडियल कंडीशन लेते हैं ना। हमने माइस मॉडल पे किया है, लेकिन वो आइडियल कंडीशन पे किया है। तो जरी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट डायबिटीज का है, तो उसके ऊपर जरी बात है शायद रिस्पांस रिलेटिवली स्लो हो, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन जो लिटरेचर कहता है वो ये कहता है कि बायोएक्टिव ग्लास में ये प्रॉपर्टी जरूर मौजूद है। इट विल क्रिएट इट्स ओन एनवायरनमेंट। तो उस एनवायरमेंट, वो इतना रबस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि उसमें सेल्स कैस्केड की फॉर्म में प्रोलिफरेट और ग्रो करते हैं, और जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं उनका इफेक्ट बड़ा मिनिमम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ अ ट्यूमर, अगर हम बायोएक्टिव ग्लास बेस्ड स्कैफोल्ड ड्रग लगा देते हैं, तो इवन द ट्यूमर सेल्स or the growth of the tumor will not be able to penetrate that cascade of a bioactive glass scaffold, and the healthy bone will be formed into that scaffold, and it will eventually overpower the tumor cells as well. So this is the big claim about the bioactive glasses, but the clinical and the animal model has shown these results. So there are many studies on the bioactive glasses that even the immunocompromised, or these the patient with certain age-related issues and different sort of, if we go to the continent, for example, in Pakistan, maybe the patient has received many antibiotics, and go to the Europe, the health may be better. So they have applied the bioactive glasses starting from India, Pakistan, to the Europe and the USA, and it has shown very good result. Even in Germany, there is a Sensodyne brand of the toothpaste, and they use bioactive glasses for the improved health of the teeth as well. So there are many products. For example, there's a Unigrafts that has been used in case of a dentistry for the as a dental grafts. The Unigraft, very popular brand of USA, I think, and they are made up of bioactive glasses, and they can really they have a very slow degradation rate, and they can really promote a new bone formation. So there are many cases. For example, there's a practical case that there's a cyst in the dental bone, and they removed that cyst and then put that unigraft there, made up of bioactive glass. And in around 1 year or the 6 months, this bone has almost healed up. So in Pakistan, we have provided that bioactive glasses to the various dentists, and they have shown a good results as a grafting material as well. So this is not about the skin. This is also about the bone stuff. Also valid even in the cartilage repair, where the chances for the blood flow are very minimum, and the cartilage repair is very difficult due to the different pH conditions, different blood circulation conditions compared to the other parts of the organ, other organs of the human body. So bioactive glasses, through the really controlled release of ions, is giving wide range of multiple therapeutic effect. So I hope that I have answered the question, and maybe this will be helpful in the future slides as well. So if we just look at that picture, we see here the negative control in the 14 days. We see here the positive control, this is Polyfex, and then our own material here. You can see that even the hair follicles has grown up, and compared to the positive control, you see after 14 days the skin has almost healed up,
and even the hair follicles has been grown on the surface of the burnt skin. We give a full thickness wound to that mice, and then after 14 days, we see that there's a very good healing effect to that rat. In my opinion, when we have also done the histological analysis as the histological slides were prepared, that clearly shows that the sensory neurons has also regenerated. In my opinion, this was the breakthrough result. That's why that paper get published in a good journal. That we have regenerated the sensory neurons in a skin that has been in a normal incidences, whatever we use, polyfax or even other grafting techniques, the new skin that has been formed do not have a sensory neurons. It means it cannot detect the degree of hotness and coldness. This is very common in the case of new skin formation after the burn. But here we see regeneration of the sensory neurons and hair follicles. It means that we have formed a same skin, and we have mimicked the same skin that was present on that rat before the burn. So it means that this skin can sense the degree of hotness and coldness, and the hair follicles has also grown up. So this was a very good result in my opinion. This in vivo cam or a chick model studies also shows very good angiogenic potential in the sample F. So it means our scaffolds are promoting the skin regeneration potential. In addition to that controlled release of the ions, we study almost 13 to 14 biomarkers of the biochemical analysis. For example, TNF alphas and as well as VEGF, vascular endothelial growth factors, and the results show that there's a high increase in VEGF and in particular interleukins, which are responsible for having the inflammation were also reduced. So there are a wide range of biochemical analysis also done on these samples. So I will just skip that magnetic drug therapy part and just give a brief intro here. That in case of the brain cancer, the main problem is that we cannot carry the drug to that area of the brain or area of the neuron where the tumor exists because of the blood-brain barrier, the preventive system by the Allah that prevent any toxic ions to reach to the brain. So this is also a barrier in the treatment. We develop these magnetically driven. We can really drive by these nanoparticles to the brain, and then by using the pH stimulus and the temperature stimulus of the tumor, we can release that ions or at the site of a tumor, and we have a really highly localized release of ions. We have done this project in combination with a professor from the Germany in Bochum, where we integrated the AI technology to really check where the neurons has been affected by the tumor, and then we really provide that nanoparticle at that site of tumor. And this, in case of brain, the precision is really important. So by using the AI, we get the precision, and then these nanoparticles approach a highly selective approach to reach at the site of the neural defect and then release the herb or the drug that is intended to treat the tumor. There's a huge market where there are some results also where we see the killing of the cancer cells, and we see that it is not toxic to the human mesenchymal stem cells. This was the project of my MS student, Miss Zaida. She's also currently in USA for doing the PhD. She got a good funded PhD position in USA after doing that work. I think I should go directly to the bone because maybe the cartilage portion will be the less effective one. Yes, this is quite interesting. The dental implants. We have here very close affiliation with RV Medical College, specifically Dr. Kaleem Group, who's working in the dental materials, and we have been working with them. We have working with Dr. Amber Farid in Ajman, working in the field of dentistry. So
keeping in view the need of the dental implants, we have also developed a 3D printed polyethylether ketone. This is very popular material in dentistry nowadays, specifically because of its color being white and aesthetically very close to the teeth, and it has also very good mechanical properties. So we prepare a scaffolds of PEEK with sodium alginate, and in that case we'd use silver and strontium doped hydroxyapatite. So this is a combination of three different materials. We need to understand why they are there in case of a dental bone scaffolds. So uh, PEEK is here for giving a very good strength. And in case of the bone, as we all know that in case of a dental bone in particular, the chances for the regeneration or the regeneration process is very slow. That's why we need a sort of a permanent implant with a very slow degradation rate. That's why we use a PEEK. PEEK usually do not degrades. And then we have sodium alginate, which will degrade. And then we have a silver and strontium doped hydroxyapatite. This hydroxyapatite will try to heal or try to regenerate the bone. And the release of the silver and the strontium ions are very important. As you know that in dentistry, that the silver may give a blackish color when it is released in excessive amount. That's why we take care, and the release of silver was really controlled and precise, that it do not give the change the color of the implant, or it can affect negatively through the excessive release of the silver, because it can also be toxic to the human cells. And then we have a strontium. Strontium is well known for enhancing bioactivity, means it can enhance the regeneration effect of bone. In particular, dentistry, this is important because release of the strontium ions has shown a positive effect there. So we work on that. Usually the typical issues are the stress yielding, because if we use a metallic implant, for example, titanium, titanium has very high elastic modulus compared to the bone, and the chances are there for a stress yielding, that excessive stress is being applied on the implant, and then there are chances for the wear, and the wear debris are produced, which may cause inflammation. So this is what we have developed. We have also coated dental screws with biocompatible coatings, bioactive coatings as well. Again, this is a typical 3D printing strategy here. Uh, this is actually the reverse process that we take into account while printing the skin. In case of the skin, the ink get thin when we extrude it. But in case of a bone or in case of a PEEK, when we apply a pressure, it get more viscous. It give a shear thickening effect. We call it as, when you apply a shear, it get thickening effect. That's why the printing of this sort of material is very difficult, and to get a very good control of the printed structure is even difficult in comparison to the skin. So that's why we always start with the skin. And when we have a good grip over the 3D printing, then we start to print for the bone and then dental bone as well. So we get a good shear thickening effect. That's why we have to apply a more and more pressure and more extrusion pressure. We have to use a big motors to get them extruded. And then we make a 3D printed scaffold, as you see here. This is the design, and you can see a very nice 3D printed scaffold of the polyethylether ketone at room temperature. This is very important that we print polyethylether ketone at a room temperature, because if we would have printed PEEK and at a high temperature, for example, by using the typical fused deposition modeling technique, which is being used as in the 3D printing nowadays, that it is a melting technique. It melt that polymer and then print. So if this technology is being used here, then it will change the color, because PEEK will oxidize and it will change the color to the brownish color. And then aesthetically it is not correct, and also chemically not correct. And if we cannot load these biological ions, for example, silver and strontium, when you're using higher temperatures of printing. So this room temperature printing allow us to
to include silver and strontium together in addition to these biopolymers, which gives a very good biocompatibility to the human dermal pulp cell lines that we have used here. These are typical cell lines used in case of a dentistry to study the biocompatibility. So very good results against that human dermal pulp cell lines. And in case of dentistry, as you know, most of the people are dentists, so you know that S mutants anaerobic bacteria is more important than this E. coli and Asaurus. And we use S mutants as well and study the antibacterial effect in that case against S mutants. You can see the scanning electron microscopy images, that very nice 3D printed scaffold with almost 75 to 80% accuracy compared to the design of a design that we give to the 3D printer. And then we see here these very nice spheres. Actually, these are micro scale spheres of hydroxyapatite particle loaded with silver and strontium together. You can see a colored mapping, and you can see here the silver, and you can see here the strontium block as well. So it means that silver and strontium has been successfully loaded onto these scaffolds, and these scaffolds are very robust. They have a very good mechanical strength. For example, they can really go even into the gigapascals. So, in my opinion, 70 to 80 megapascal as a bone grafting material would be enough, but they can go to 1 to 2 gigapascal even. And we have got these results as well. This paper was published in a very nice journal, Dental Materials, as recently in 2025 with collaboration with Ajman University. So the work was actually done in my lab. Here we used 3D printed peak sodium alginates in combination with silver and strontium. And we study again the release of the ions, toxicity against human dermal pulp cell lines, and antibacterial effect against S mutants. So you can just go and check that paper as well. I will just skip this. This is a very nice study actually on the filtration membrane in my lab. So in my opinion, this is very much relevant, and what has been developed in Pakistan nowadays is still we are using the titanium or the steel stuff in the dentistry as a dental screws. Um, Am I right that still in Pakistan we are using, I guess, that's typical titanium and stainless steel screws? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है, अभी तक यही जी यूज तो हो सर। रहा बस है। इसी चीज को थोड़ा सा एड्रेस करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन्हीं स्क्रूज को, क्योंकि देखिए हम एक तो वो शेप मेमोरी वायर यूज करते हैं निटिनॉल की, तो उससे भी हम्म। चांसेस होते हैं कि निकल रिलीज होगा। जब निकल रिलीज होगा तो वो कैंसर काजिंग है। और इन केस ऑफ स्टेनलेस स्टील क्रोमियम के हेक्सावेलेंट आयंस रिलीज होते हैं, जो वो भी कार्सिनोजेनिक हैं। फिर निकल एलर्जी भी काज करता है। तो ये तमाम जो आयंस हैं बेसिकली, अगर डेंटल एप्लीकेशन में देखे जाए तो डेंटल की जो एप्लीकेशन है ये थोड़ा लंबा अरसा चलते हैं। डेंटिस्ट्री में लोडिंग कंडीशन मेरी नज़र में ज़रा एक्चुअली स्टिल इनको हम उस तरह क्लासीफाई नहीं करते हाई रिस्क में, लेकिन इन पे जो लोडिंग कंडीशन है वो बड़ी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द ऑर्थोपेडिक। जा को अगर देखें तो 3 डायमेंशनल लोड लग रहा है इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है और कि ये ज़रा सर, ट्रिवियल है। ये जो जी जी डेंटल इम्प्लांट फेल्योर भी सर लोडिंग के बाद ही ज्यादा है, रेट है। मतलब जी जी, ओसी बिल्कुल इंटीग्रेटेड बिल्कुल। जो पीरियड होता है उसमें तो वो अगर आपका 100% भी सक्सेसफुल है तो आफ्टर जी लोडिंग जी जो है ना वो फेल्योर में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बहरहाल हमारी लैब में काफ़ी डेंटिस्ट आते हैं जो कि इवन डेंटल फिलिंग मटेरियल भी बनाते हैं, बायोएक्टिव ग्लास भी सिंथेसाइज करके ले जाते हैं और बाद में क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं। सर तो इंशाल्लाह हम। क्योंकि बायोग्लास है तो एफडीए अप्रूव मटेरियल है, लेकिन अगर हम इसको इंपोर्ट करें तो बड़ा महंगा मिलेगा। तो लोकली अगर बनाएं तो मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार रुपये में 1 ग्राम बन जाता है। यूनिग्राफ्ट मेरे ख्याल है अगर हम 1 ग्राम इंपोर्ट करें तो वो 1.5 लाख में पड़ जाता है तकरीबन। $500 के लगभग है यूनिग्राफ्ट का ये एक वाइल, जो 1 ग्राम या 1.5 ग्राम की है। सर तो एक्चुअली क्वाइट अनफॉर्चुनेटली ना, बीइंग जी जी डेंटिस्ट हमारा जो एक्सपोजर भी कम है और दूसरा ये कि हमें लैब्स तक एक्सेस भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे ही है, आप बिल्कुल है। के पास आते हैं, आपके पास वहाँ के डेंटल एक्सेस होगा, लेकिन हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे नहीं, हमारे पास तो
एक अच्छी चीज ये है कि हमने कई मास्टर की थीसिस करवाए हैं जो डेंटल मटेरियल में मास्टर करते हैं, और वो प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हैं ज्यादातर लोग। अभी भी शायद आप जानते हो, डॉक्टर कलीम का तो बड़ा फेमस ग्रुप है पाकिस्तान में, उन्होंने डेंटल मटेरियल्स में एमएस, मेरे ख्याल से काफी जी। पुराना है उनके पास एमएस डेंटल मटेरियल। इसी कौन? तरह डॉक्टर शीरीन है यहाँ पे, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, एफओजी फाउंडेशन हॉस्पिटल के साथ, वो उधर की वो डेंटिस्ट्री के हेड है, तो वो भी लोग आते हैं यहाँ पर। और इसी तरह के कोटेड इम्प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे हैं आजकल हमारे साथ वो। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट देखा कि हमें डेंटिस्ट्री में ना वियर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। यानी हम यूजुअली क्या करते हैं, हम इम्प्लांट को कोट कर देते हैं पॉलीथर ईथर कीटोन से, पीक कोटिंग, स्टेनलेस स्टील को भी और टाइटेनियम से भी। तो वो दोनों बड़े अच्छे हैं मतलब कोटिंग के लिहाज से तो। लेकिन आफ्टर द सम टाइम हमने ये देखा कि पीक के जो क्योंकि कॉन्टिन्यूस जा में जब प्रेशर पड़ रहा है ना एक चीज पर, और कॉन्टिन्यूस लोडिंग कंडीशन है, तो पीक स्टार्ट टू वियर आउट। तो उसी की वियर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए जिरकोनिया बड़ा फेमस है मेरे ख्याल से डेंटिस्ट्री में। तो जिरकोनिया को इस्तेमाल किया। जब हमने पीक में जिरकोनिया को शामिल किया तो उसकी हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ में मैसिव इंप्रूवमेंट आई है। अभी मेरे ख्याल से पेपर अभी पब्लिश ही हुआ है, लास्ट मंथ ही मेरे ख्याल है, अभी ऑनलाइन आया होगा। तो उसके रिजल्ट इधर नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो हमने उसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ पीक एंड जिरकोनिया पे काम किया कि क्या कंपोजिशन आइडियल है फॉर द डेंटल एप्लीकेशन। तो उसके बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए हैं, पीक के और जिरकोनिया के कॉम्बिनेशन को हमने यूज किया है। और ऑब्वियसली उसमें वही बायोएक्टिव ग्लास इंक्लूड रखा है ताकि यही रीजनरेशन को थोड़ा बढ़ाया जा सके। तो सर वो अगर ये आप जो सर ये जी जो जी विंडो जोन है, फिजियोलॉजिकल जो विंडो जोन है, उससे जी जी भी मतलब जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि कंटिन्यूस लोड पड़ता है जॉब पे, ये जब आप इम्प्लांट देते हैं, लेकिन वो भी तो जी वेरी जी करता है ना एरिया टू एरिया। जैसे अगर पठान लोग हैं बिल्कुल या ये जो पहाड़ों में रहते हैं, उनका जो जी लोडिंग जी जोन जाहिर सी बात है, उनका लोड जो है या वो बिल्कुल। ज्यादा होगा कंपैरेटिवली जो हमारे साइड के लोग हैं। तो क्या इससे भी हम्म। उसका है कुछ मतलब रिलेशन है उन दोनों का, पीक और जिरकोनिया का? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में, मुझे सर इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पीक जो है मच बेटर देन, सॉरी, जिरकोनिया मच बेटर देन पीक। मैंने पढ़े नहीं नहीं, हुए आप थे ये सही कह रही मटेरियल, लेकिन अब है। काफी टाइम हो गया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है, जिरकोनिया इज मच बेटर देन पीक। लेकिन फिर वही मसला है ना, जिरकोनिया इज वेरी वेरी हार्ड। तो वो इतना हार्ड है कि वो क्या करेगा, वो आपके अगर हमने कोटिंग के तौर पे इस्तेमाल किया तो वो साथ के बोन को भी वियर आउट करेगा, और अगर टीथ के साथ है या गम के साथ इंटेक्ट आ रहा है ना, तो वो उसको भी इफेक्ट करेगा बड़ा नेगेटिवली। तो ये भी एक हमारे लिए इशू है। तो इसको भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो इस वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डेंटल बोन के या टीथ के और गम के रेलेवेंट रहें। ये ना हो कि हम उससे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर दें। तो जिरकोनिया इज टू हार्ड, इट विल श्योरली क्रिएट दैट डेब्रिज, और वो डेब्रिज फिर बड़ी पेनफुल हो जाएंगी उनको। वो तो फिर लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन काज करेंगी मेरी नज़र में। तो अ, अकेला जिरकोनिया का टीथ बनाना तो शायद समझ आता है, क्योंकि वहां पर डिफरेंट एप्लीकेशन है। लेकिन अगर डेंटल बोन में ड्रिल करना है कुछ, और वहां पर स्क्रू को यूज करेंगे, तो वो स्क्रू में ऑब्वियसली अगर जिरकोनिया की कोटिंग करें खाली, तो वो मेरा नहीं ख्याल इज गुड आइडिया। सर ये स्क्रू वियर ऑफ का भी होता है ना, फिर वो इम्प्लांट जो आपका लूज हो जाता है, तो जी उसके जी लिए भी है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वो यही तो कह रहे हो कि बेसिकली होता यही है कि जब आप ऐसे मटेरियल से कोट, इवन टाइटेनियम को प्योर को यूज कर लें तो होगा, क्योंकि वो ड्रिल तो आपने उसको बोन के अंदर ही किया है। तो जो बोन के अंदर जब ड्रिल कर दिया, तो दोनों के इलास्टिक मॉडुलस में या मैकेनिकल स्ट्रेंथ में बड़ा फर्क है। तो क्या होगा, जब लोड लगेगा तो ज्यादा लोड बियर करना पड़ेगा बोन को, तो वो सारे का सारा लोड जल्दी से ट्रांसफर कर देगा बोन को। और क्या होगा कि जो आपका स्क्रू है वो आहिस्ता आहिस्ता वियर आउट करना शुरू कर देगा बोन को, और उसकी वजह से लोकलाइज्ड डेब्रिज प्रोड्यूस होंगे। और क्या होगा कि यहाँ पर इम्प्लांट लूजनिंग शुरू हो जाए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, बोन तो आहिस्ता आहिस्ता वियर आउट होना शुरू होगी है। तो वो जो इम्प्लांट है वो लूजन अप हो जाएगा उस सरफेस पे। और इम्प्लांट लूजनिंग फिर और पेनफुल है, और उसका तो फिर एक ही हल है कि वो इम्प्लांट फिर रिमूव करना पड़ेगा। तो बिल्कुल उसके लिए फिर यही करते हैं कि हम कॉम्बिनेशन कंपोजिट कोटिंग करते हैं, ना कि प्योर पॉलीमर, ना ही प्योर सरामिक। क्योंकि वहां पर लुब्रिकेशन भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए। अकेला पॉलीमर यूज करेंगे, लुब्रिकेशन आ जाएगी, स्ट्रेंथ नहीं आएगी।
अकेला सेरामिक यूज करेंगे तो देर विल बी नो लुब्रिकेशन। तो ये हमें दोनों प्रॉपर्टीज का बेसिकली कॉम्बिनेशन चाहिए। आई होप आई हैव आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू ठीक है सर, जी। थैंक यू अच्छा, सर। तो इस एक पे और खासा रिक्वेस्ट है काम है आपसे। बेसिकली। सॉरी, जी जी सॉरी सर, जी जी सॉरी सर, सर जी एक रिक्वेस्ट और है। ये सर जो आपने आर्टिकल्स बता रहे हैं, क्या सर ये आप ग्रुप में शेयर कर देंगे? Ram, these बिल्कुल, are मैं सर available को शेयर कर online, दूँ। so you can access them. I can give you the access. मैं आप ओके जो सर, ओके जो सर। सब ये आर्टिकल आपको चाहिए, you can go on his Google Scholar बिल्कुल, profile. ये और अभी स्कॉलर मेरे प्रोफाइल ख्याल से से। जाके जो भी होगा ना, जस्ट रीच आउट टू मी। मैं आपको फुल टेक्स्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं भेज दूंगा आपको, ओके? थैंक यू आई नो सर, इट्स वेरी थैंक बिल्कुल, यू मैं सर। एक्साइटिंग। आई नो एवरीथिंग इज वेरी एक्साइटिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी अपनी ही प्रोफाइल है गूगल स्कॉलर, शायद आपको नजर भी आ रही हो। इसमें पहला ही पेपर देखें, आपको नजर आ रहा है, फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक बैंड्स कोटेड विद काइटोसन जिंक ऑक्साइड नैनो कंपोजिट एंटीबैक्टीरियल इलेक्ट्रोफोरेटिक डेपोजिशन से हमने कोट किए हैं ऑर्थोडोंटिक बैंड्स को। तो ये भी हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के, यही थे जिनका ये बेसिकली मास्टर थीसिस था, लेकिन इन्होंने किया मेरी लैब में था। फिर आपको नजर आ रहा है ना ये पहले वाले बीएमसी ओरल हेल्थ में जो है। फिर जी जी। इसी तरह मैं जिस पेपर का जिक्र कर रहा हूँ, दिस शुड आल्सो कम ओवर देयर। भी देयर टॉप पे होना चाहिए क्योंकि वो अभी रिसेंट पब्लिश हुआ है। हाँ, ये देखिए, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ जिरकोनिया एंड जिंक ऑक्साइड इनकॉर्पोरेशन। इसका सिर्फ एक नज़र आप अगर एब्स्ट्रैक्ट देख लें तो खासी क्लैरिटी मेरे ख्याल से आपको। जिरकोनिया को यूज़ किया है, जिंक ऑक्साइड को यूज़ किया है, पीक को यूज़ किया है और कोट किया है ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के ऊपर। तो ये हमारा अभी रिसेंट काम है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखना चाहें तो जस्ट मेरे ख्याल है बड़े आसानी से अगर गूगल स्कॉलर पे जाएं तो मेरी प्रोफाइल से आप ये पेपर देख भी सकते हैं। वैसे मैं शेयर भी कर दूंगा सर को पीडीएफ में इंशाल्लाह। मैं तो ऑनलाइन एक्सेस करके आई कैन मैं फुल टेक्स्ट भेज दूंगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग द फुल टेक्स्ट। जी। तो कोई। थैंक यू चलिए सर, मैं थैंक यू। कंटिन्यू। जी जी सर अच्छा, प्लीज। ये थोड़े नए हैं, पुराने हैं, मतलब जो पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी रिसेंट जो आई हैं उनको मैंने इसमें अभी अपडेट नहीं किया। आई विल श्योरली अपडेट देम इन द फ्यूचर। तो आई गेस ये है हमारे जी। तो देखें, अगर आप ह्यूमंस को देखें तो जहां जहां पर बोन्स हैं वहां वहां पर हमें इम्प्लांट की जरूरत पड़ रही है। मैक्सिलोफेशियल से लेकर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, सब जगह स्पाइन पर जरूरत पड़ती है कि हमें वहां पर, खासकर जो आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स हैं और लोड बेरिंग जॉइंट्स हैं, इन दो तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बल्कि अभी रिसेंटली तो मैं वो कोर्स पढ़ा रहा था ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल इम्प्लांट्स में। इवन उस पे हमने फिर वो भी पढ़ाया कि सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो कैसे करनी चाहिए बाय यूजिंग द एओ गाइडलाइंस। क्योंकि ऑर्थोपेडिक का कोर्स था तो उसमें ज़्यादा हम फिर एओ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो इस केस में जो हमने ज्यादातर काम है ना आर्थोपेडिक सेक्टर पे और डेंटल सेक्टर पे, क्योंकि ये थोड़ा मिलते जुलते ही प्रॉपर्टीज चाहिए इस केस में। तो हमने ज्यादा काम किया नेचुरल हर्ब्स के ऊपर एंड नेचुरल पॉलीमर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव यूज्ड जाइन इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉर्न और मेज, रेडिली अवेलेबल है, बड़ा चीप सोर्स है। बल्कि अभी ही डॉक्टर क्लीम के साथ एक और पेपर हमारा उसकी रिविजन्स आई हैं तो उसमें भी हमने वी यूज दैट जाइन एंड देन वी हैव यूज दैट इन कॉम्बिनेशन विद सिल्वर एंड स्ट्रॉन्शियम डोप बायोएक्टिव ग्लासेस। तो वही है, लेकिन इस केस में जो अभी आपके सामने है इसमें एक कॉमीफ्लोरा वेगीती, दिस इज अ नेचुरल हर्ब विच इज वेरी गुड फॉर द बोन हेल्थ। वेल नोन थी लेकिन हमने इसी का एक्टिव इंग्रेडिएंट लिया जो कि बोन को एक्चुअली, या जिसे आम अल्फाज में आप अगर कहें तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी को इन्हांस करता है। तो जो एएलपी पर्टिकुलर बायोमार्कर है उसकी इन्हांसमेंट करता है। और साथ ही साथ हमने जाइन को यूज किया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का फायदा यह है कि जाइन विल इंड्यूस अ बायोकम्पैटिबिलिटी एंड दैट Commiphora vegetae will enhance the alkaline phosphatase activity
and this is giving a multiple functionality. This is also antibacterial as well. तो हमने इससे ये इफेक्ट भी ले लिए कि एंटीबैक्टीरियल भी है और साथ ही साथ ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी को भी बढ़ा रहा है। तो कोटिंग्स की थोड़ी बात कर रहे हैं कि कोटिंग्स का मेरे ख्याल से डेंटिस्ट्री में बड़ा अहम रोल है। तो कोटिंग्स देखें कि स्लाइटली पोरस कोटिंग्स हैं, दे कैन बी इवन 5 माइक्रोमीटर से लेकर हम 10, 15, इवन 50 माइक्रोमीटर तक थिक कोटिंग्स बना सकते हैं सिंपली हम, क्योंकि हमारी जो टेक्निक है वो रूम टेम्परेचर है, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफ्रेटिक डेपोजिशन। सिंपल जैसे बैटरी है उसी तरह का सेटअप है, एक कैथोड है एक एनोड है, और जिसको भी आपने डिपॉजिट करना है उसको बीकर में आप डिस्पर्स कर लेते हैं, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन दीज पार्टिकल्स अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो वेरी सिंपल प्रोसेस है, रूम टेम्परेचर पे, एंड बीकर केमिस्ट्री है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप यू गेट अ वेरी गुड कोटिंग्स एज यू सी हियर, क्वाइट गुड आर्किटेक्ट है इनका, विच इज गुड फॉर द बोन रीजनरेशन। क्योंकि अगर रफनेस नहीं होगी, जो टिपिकल गाइडलाइंस हैं वो ये कहती है कि 3 प्रॉपर्टीज की बड़ी अहमियत है, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस टोपोग्राफी एंड सरफेस वेटेबिलिटी। अगर हम हाइड्रोफिलिसिटी अचीव करते हैं अराउंड कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ 35 डिग्री, दिस इज गुड फॉर द इनिशियल प्रोटीन अटैचमेंट। फिर अगर हम रफनेस की बात करें तो अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस कर देंगे तो सेल्स अटैच नहीं होंगे। यूजुअली सेल्स जो है वो क्यूबाइडल शेप हैं, ऑस्टियोब्लास्ट की बात करें तो उनकी भी 1 से 2 माइक्रोमीटर के दरमियान उनके साइजेस हैं। तो अगर रफनेस का भी यही साइज रखेंगे, रफनेस जो है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर के दरमियान होगी, तो ये आसानी से सेल्स एंकर हो जाते हैं इनटू दीज पोर्स, जो आपको यहाँ पर स्मॉल पोर्स नजर आ रहे हैं, ये रफनेस है, बेसिकली वैलीज हैं इनके दरमियान, वो सेल्स एंकर होना शुरू हो जाएंगे। तो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ वेटेबिलिटी अच्छी हो गई, फिर सेलुलर अटैचमेंट भी हो गई, और तीसरा काम ये है कि हमारी सरफेस केमिस्ट्री जो है वो मिलती जुलती होती है जैसा कि ह्यूमन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की है। तो जाइम का जो स्ट्रक्चर का देखें तो इट इज बेसिकली पॉलीसैकेराइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी अमाइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। तो इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी भी है विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, दे हैव अ वेरी गुड रफनेस, दे हैव वेरी गुड वेटेबिलिटी। तो तीनों प्रॉपर्टीज का जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इन डेंटिस्ट्री एंड इन ऑर्थोपेडिक्स, to get good initial protein attachment and later on cellular attachment and leading to the organ development. सर जी जी एक क्वेश्चन है। सर ये आपने बताया ठीक है, ये अटैचमेंट के लिए बेस्ट है, बट फिर वही बात आ जाती है, अगर आप डेंटल इम्प्लांट की बात करें तो ये इनिशियल फेज के लिए बता रहे हैं आप, या आफ्टर लोडिंग भी मतलब लोडिंग के बाद हर चीज का वो फिर इम्पैक्ट चेंज हो जाता है? ये इनिशियल की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल कि ठीक है इनिशियल सर। डिजाइन ये होना चाहिए। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आजकल के दौर में तो केस स्टडीज और एआई के दौर में तो इतनी चीजें आसान हो गई हैं कि वो सारी स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला है कि अगर कोई भी कोटिंग 10 न्यूटन की एडाहेजन स्ट्रेंथ शो कर देना, 10 न्यूटन की, तो वो सरवाइव कर जाएगी ऑर्थोपेडिक एंड डेंटिस्ट्री के लोड्स को। तो वो 10 न्यूटन इज सफिशिएंट यूजुअली ना। तो वो पी की जो कोटिंग्स आती हैं यूजुअली 17 to 18 न्यूटन तक जाते जाते उनको कुछ भी नहीं होता, तो दे आर वेरी सेफ। तो जो क्वांटिटेटिव एडहेजन स्ट्रेंथ है वो 17 न्यूटन है, अगर आप पास्कल्स में कन्वर्ट करें तो ये खासी ज्यादा बन जाती है। तो 17 न्यूटन की एडहेजन स्ट्रेंथ इज क्वाइट गुड। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, यूजुअली मार्केट में पेंसिल्स मिल जाती हैं डिफरेंट ग्रेड्स की। तो अगर आप देखें कि स्टार्टिंग फ्रॉम 9B to 9H, 9B सॉफ्टेस्ट पेंसिल होती है और 9H हार्डेस्ट होती है। तो ये एएसटीएम का स्टैंडर्ड है कि आप जस्ट लाइन लगा लें, और जो पेंसिल स्क्रैच कर दे कोटिंग को तो वो कोटिंग उतनी हार्ड समझी जाए। तो वेरी सिंपल टेस्ट है एएसटीएम स्टैंडर्ड का, बड़े आसानी से किया जा सकता है। अगर कोई कोटिंग आपके पास आ गई है इवन इन द क्लिनिक, यू कैन जस्ट टेस्ट देम बाय स्क्रैचिंग द पेंसिल एज वेल। तो जो बहरहाल हम लैब में करते हैं वो ये क्रॉस एज टेस्ट है, जिससे हम कोटिंग की एडहेजन को मॉनिटर करते हैं। जस्ट लाइक अ रेजर ब्लेड, वी मेक अ स्क्रैचेस, वी पुट अ टेप ऑन इट एंड देन वी रिमूव द टेप। और अगर तो कोटिंग उतर जाए, जैसे इधर डिलैमिनेट हुई है,
तो हम कहेंगे कि जी जैसे यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 15% ऑफ द कोटिंग जो है वो रिमूव हो गई है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 4B है। और अगर मोर देन 15% डिलेमिनेट हो जाती तो ये 3B पे चली जानी थी। जो एक्सेप्टेबल है फॉर द ऑर्थोपेडिक्स, दिस इज 3B। 3B तक एक्सेप्टेबल है ASTM स्टैंडर्ड के मुताबिक। लेकिन अलबत्ता क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिजल्ट है, तो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स भी हम यूजुअली करते हैं, और उसमें फिर हमें पता चल जाता है कि एडेशन स्ट्रेंथ क्या है। वो ज़्यादा बेहतर है अगर क्वांटिटेटिव किया जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट 2 इयर्स में हमारे पास ऑटोमेटिक स्क्रैच टेस्टर आ गए, तो अब हम क्वांटिटेटिव एडेशन स्ट्रेंथ को क्वांटिफाई कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ दी क्वालिटेटिव ग्रेड्स, विच इज़ मच बेटर। अच्छा, फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ ये कर देता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द रिलीज ऑफ, बल्कि ये कहना कि अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ टॉक्सिक मेटल आयंस फ्रॉम दैट मेटालिक इम्प्लांट्स, इनको रोकना बड़ा जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ टॉक्सिक मेटल आयन। सो हम ये चेक करते हैं कि कोटिंग को जब हम आर्टिफिशियल स्लाइवा या फिर सिमुलेटेड बॉडी फ्लूइड में रखेंगे और 37 डिग्री सेल्सियस देंगे टेम्परेचर, तो क्या ये कोटिंग जो है ये डिग्रेड तो नहीं कर जाएंगी, क्या ये कोटिंग पील ऑफ तो नहीं कर जाएंगी? तो अगर तो ऐसा है तो मतलब फिर इस कोटिंग का इतना फायदा नहीं हो रहा। तो ये बड़ा जरूरी है कि उनको इलेक्ट्रोलाइट, वही इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड किया जाए जो कि एक्चुअली ह्यूमन बॉडी का फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन है। तो हम सिमुलेटेड बॉडी फ्लूइड बिल्कुल वही कंपोजिशन है जो ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा की है, और टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड में उस प्लांट को इमर्स कर कर रखते हैं। और ये इस टेस्ट की एक बहुत ज्यादा मैं समझूंगा कि बड़ी जबरदस्त चीज है, और इसकी खूबसूरती ये है कि इट कैन प्रिडिक्ट द लाइफ ऑफ द इम्प्लांट। हमें पता है कि कोटिंग लेट से 10 माइक्रोमीटर थिक है, और ये मुझे ये बता रहा है कि 1 माइक्रोमीटर कोटिंग डिग्रेड कर जाएगी 1 साल में, क्योंकि ये मिल्स पर ईयर में मुझे रेट बता रहा है। तो मुझे अंदाजा होगा कि ये कोटिंग कितनी देर सरवाइव करेगी अंडर दैट फिजियोलॉजिकल मीडियम एंड द लोडिंग कंडीशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो अगर तो ये कोटिंग लेट्स से 2 इयर्स तक सरवाइव करेगी, तो फिर इस कोटिंग का फायदा नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम इसको एक एग्जेजरेटेड कंडीशन देकर और हाईली टफ कंडीशन देकर कोटिंग को ये क्वालिफाई करवाते हैं, और चेक करते हैं कि ये कितनी देर तक रहेगी और वो अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखेगी। और जो टॉक्सिक आइंस फ्रॉम दैट मे बी निटिनॉल वायर और डेंटल ब्रैकेट्स में से कोई अगर चीज लीच होती है तो वो ह्यूमन के लिए टॉक्सिक हो सकती है, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज कोटिंग्स फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल्स। ये सारे जो मैं आपसे बात करूं, दिस फ्रॉम आवर ओन लैब रिजल्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो हमने लैब में किए हैं। अच्छा, अब ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपिक रिजल्ट हैं। मुझे अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगाना है, मुझे अगर 1 मिनट दे दें तो ये हम बैलेंस फ्लोरेसेंस है, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज माइक्रोस्कोप। प्लीज टेक योर टाइम। जी सर। तो मैं असल में कॉमन रूम में बैठा हूँ, तो मुझे सॉकेट्स का अंदाजा नहीं है इधर। अच्छा हम अच्छा अच्छा। फैकल्टी मास्टर में, तो मैं देख रहा हूँ। अगर वैसे हम कंटिन्यू करते हैं, अगर ये फिर सेशन ब्रेक हो गया हाँ हाँ। तो फिर मेरा ख्याल है हमारे पास कितना टाइम है सर अभी और? सो वी हैव अनदर 10:40, मतलब 45 तक है अभी। 21 हुए हैं आपके, मेरे ख्याल से 9:21 हुए हैं। जी जी। अच्छा, फिर मुझे बस 2 मिनट दें, मैं हाँ, इसको प्लग इन करता हूँ, मैं कर प्लग ले इन कर ले। करता हूँ नाइन सर। फोर्टी ओके। फाइव तक टाइम है।
Any questions so far? सर मुझे ये पूछना था कि अभी सर बता रहे थे कि आप ये जो कोटिंग वगैरह का बता रहे थे, तो मैंने सर से ये पूछना था कि जो ओरल एनवायरनमेंट है, उसकी जो पीएच है, तो वो उस पे इफेक्ट नहीं करेगी? आई एम श्योर कोई इन विट्रो टेस्ट किया हुआ होगा टू फाइंड आउट वेदर द ओरल पीएच, बिकॉज ओरल कैविटी की जो पीएच है वो चेंज होती रहती है ऑन एंड ऑफ बिकॉज ऑफ द इनटेक, and these implants they go, they're bone level, matlab they're inserted into the bone, so as if they're exposed in the oral cavity, okay, so that would become, make it a crown, है ना? तो ये तो बोन इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो कि सर बोन। दूसरे हाँ। वो सर मैं आपकी चलें, ये बात तो हो गई। सेकंड बात ये है कि ये सर ने कहा कि लोडिंग से पहले की है कोटिंग, और ये हम्म, मैं पहले भी सर से कह रही थी कि जितना मैंने इम्प्लांट के बारे में पढ़ा है कि जब तक आप उसकी ओसियो इंटीग्रेशन वाले फेज में अगर आपका इम्प्लांट 100% भी सक्सेसफुल है, तो ज़्यादा क्या बल्कि 90% जो है फेलवर वो आफ्टर लोडिंग होते हैं। तो अब ये कोटिंग की तो बायोकम्पैटिबिलिटी ये सारी चीज़ें तो फिट हो गई, बट क्या हम्म, लोडिंग के बाद भी ये कोटिंग जो है अ, इसका उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम होते लोडिंग के बाद है। लोडिंग से पहले तो सब हाँ, जो हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो हम इम्प्लांट यूज़ कर रहे होते हैं, हाँ, तो फेल्योर होता ज़्यादा लोडिंग के बाद है। हाँ, तो मेरे ख्याल से, हाँ सर ही बताएंगे, मेरे ख्याल से प्राइमरी स्टेबिलिटी का वेट होता है, उसके बाद देयर स्टार्ट, वंस प्राइमरी स्टेबिलिटी आ जाए और उसके बाद सेकेंडरी स्टेबिलिटी पे देखते हैं। लेट्स आई आस्क द क्वेश्चन टू डॉक्टर अतीक, आप जी बताएंगे। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा है कि यूजुअली देखें ना, जब इम्प्लांट हो गया तो इम्प्लांट होने के बाद यूजुअली इंटीग्रेशन विद द बोन स्टार्ट हो जाती है, और जो मैक्सिमम चांसेस फॉर द फेलियर है वो बिफोर द इंटीग्रेशन है। वंस इंटीग्रेशन हैपन्स तो फिर तो जो बॉन्ड बनता है बायोएक्टिव ग्लासेस, क्योंकि हम इसमें बायोएक्टिव ग्लास यूज कर रहे हैं, दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। तो कहते हैं कि अगर सर्जन ने यूजुअली जो बायोग्लास बेस इम्प्लांट को रिमूव करने की कोशिश की, तो उसको लिटरली ड्रिल से उसको ब्रेक करना पड़ा। मेरा तो दे डेवलप मेरा वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। हाँ, मेरा ख्याल से, इफ यू डोंट नो, मैं I'll give you a very I'll take literally 30 seconds. Larry Hench, the person who invented the bioglass, invented this for the Vietnam soldiers in World War II. जब यूएस से सोल्जर्स वियतनाम वॉर करने करने गए थे, तो वो लैरी हेंच से बोला गया था आप एक बना दीजिए, सोल्जर्स की बोन फ्रैक्चर हो रही है। लैरी हेंच प्रोड्यूस दिस थिंग इन हिज लैब एंड ही सेंट इट टू द वॉर फ्रंट, सही है, वहां पे सर्जन्स को भेजा। सर्जन्स वहां से कॉल करते हैं इसको एंड लैरी हेंच को, एंड दे से व्हाट हैव यू डन? तो कहते हैं व्हाट हैपेंड? तो कहते हैं कि वी कैन नॉट सेपरेट द बोन टू, तो दैट वाज द बिगिनिंग्स ऑफ 45S5 बायोग्लास दैट वाज प्रोड्यूस। जो उसकी फॉर्मुलेशन है, ओरिजिनल फॉर्मुलेशन 45 लैरी हेंची, उसके बाद फिर it started evolving, so that's, the bond is so strong that it cannot it's very very strong. Even और मैकेनिकल लोडिंग आप कर लीजिए, तो आई एम श्योर डॉक्टर अतीक इस पे भी थोड़ा आप बताएंगे, है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल। नहीं सर, सर ने बड़ा जबरदस्त सर एक्सप्लेन सॉरी किया है। सॉरी और सर, जी जी, जी जी, जी जी बताएं। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। सर ने बहुत अच्छा बताया है बिल्कुल, लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ, फिर ये तो इसकी एक और लिमिटेशन होगी कि इन केस खुदा ना खास्ता अगर फेल्योर हो जाता है, तो फिर उसको रिमूव करना और मसला। देखें, बात यह है कि इंटीग्रेशन ही तो चाहते हैं ना। इंटीग्रेशन हो गई तो फेलियर के ज्यादातर तो चांसेस दिए हैं ना कि इंटीग्रेशन नहीं हुई। इंटीग्रेशन नहीं होगी तो इम्प्लांट लूज हो जाएगा, इम्प्लांट लूज होगा तो फिर रिमूव करना पड़ेगा। इफ इट इज वेल इंटीग्रेटेड विद द ह्यूमन बोन, तो फिर तो उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है, आप ये समझने ठीक की है। कोशिश कीजिएगा कि जो जो मैंने आपको पिछला पोटेंशियल स्टेट का टेस्ट दिखाया ना, वो यही है कि हम बहुत एग्रेसिव एनवायरनमेंट यूज करते हैं। आप पीएच की बात करें, अब लेट्स से वी कैन मेक इट फुली एसिडिक एनवायरनमेंट, जहां पर इसने इम्प्लांट ने बहुत जल्दी, जस्ट लाइक अ सी एनवायरनमेंट,
बहुत जल्दी डिग्रेड करना था, और कोटिंग को बड़ा हार्श इन्वायरमेंट दिया है, क्योंकि हमने हायर पोटेंशियल, क्योंकि बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल है वो तो मिली वोल्ट्स में, हमने लेट से उसको 500 मिली वोल्ट्स, यानी जो ह्यूमन बॉडी है कैन जनरेट 2 to 3 मिली वोल्ट्स, तो हमने उसको 500 मिली वोल्ट्स पे टेस्ट किया है। दिस इज 500 टाइम्स मोर। तो वहां पर जाकर जब मटेरियल क्वालिफाई कर जाता है, तो जैसे ही उसको ह्यूमन सलाइवा या फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एट द पीएच ऑफ 7.4 और इवन टू द स्लाइटली एसिडिक पीएच रखेंगे, तो चांसेस फॉर दैट इम्प्लांट डिसइंटीग्रेशन विल बी वेरी मिनिमम। तो हालांकि आपको मालूम है कि क्लिनिकल फेलियर स्टिल हैपन बिकॉज ऑफ द मल्टीपल इफेक्ट्स, उनको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता, बट ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द चांसेस फॉर द क्लिनिकल फेलियर्स। तो मेरा ख्याल ये है कि आफ्टर दिस स्ट्रेटेजी दिस robust in vitro testing or in vivo testing, we are actually trying to minimize the chances for the failure at the clinical stage. तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल टेस्ट जिनको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, तो उनकी रेलेवेंस विद क्लिनिक फॉर श्योर जो है वो एस्टैब्लिश हुई हुई है। आई होप ओके थैंक है, यू अगर सर। इसमें क्वेरी है तो बता दें, फिर मैं इसको थोड़ा। अच्छा नहीं सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, यूजुअली हमने ये देखा है, वी हैव सीन दैट इफ वी ग्रो titanium nanotubes, or we can make small pores on the surface of titanium, it improves the integration. So we actually take a commercially pure titanium and grow or anodize that titanium. यूजुअली जो आपको स्क्रूज मिलती है ना आजकल टाइटेनियम के, वो एनोडाइज हुए होते हैं, उनका कलर प्योर टाइटेनियम की तरह नहीं होता, वो ग्रीनिश कलर या ब्लूइश कलर दे रहे होते हैं। तो उनकी यही वजह है, बिकॉज दे आर एनोडाइज्ड, and we have that anodized titanium which is better integrated, or क्योंकि there are small pores inside these nanotubes, we can actually fill in these biocompatible coatings in that, and we can use these as a targeted drug delivery systems, these nanotubes. And these nanotubes can really provide the release of the ions or the molecules at the site of injury or infection. As you can see here, the cellular growth on the control sample, commercially pure titanium and TNTs is good. पॉजिटिव कंट्रोल पे भी हमें अच्छा ग्रीन कलर नजर आ रहा है, कमर्शियली प्योर टाइटेनियम में स्लाइटली लेस है, लेकिन जब टीएनटीज पर आती है तो दिस इज वंडरफुल, दिस इज बेस्ट कंपेयर टू द कंट्रोल। तो मतलब ये है कि TNTs, titanium nanotubes, or the anodized titanium has a very good viability of the cells. As you see here, after 7 days against the osteoblast cells, the viability is nearly 80%. So it means that even the coating material and this titanium nanotubes are compatible to the human osteoblast cells. This paper is also being published in a good journal. So, अच्छा, अभी जो बेसिक है वो स्टेनलेस स्टील के बारे में है, क्योंकि टाइटेनियम स्लाइटली एक्सपेंसिव हो जाता है, वी कैन आल्सो यूज स्टेनलेस स्टील, and we can functionalize that stainless steel by using the electrophoretic deposition. This is another study where we have used copper doped bioglass with uh, titanium particles or titanium dioxide particles as a fillers, because as you see here in this image, there is a porosity here. If we use the bioactive glass, there are the particles of the same size, and if we can put small balls, greenish balls in that, these greenish balls are of titanium dioxide, then the porosity is further reduced. And if we reduce the porosity, then we are actually making that implant more corrosion resistant, means we are actually making more robust coating, and the electrolyte or the physiological solution cannot penetrate to the implant. And if it would not penetrate and reach the implant surface, the leaching of the toxic ions from the stainless steel will not happen. So that's why in that case, we are trying to block the excess of the electrolyte to the implant surface through these coatings. As you see here, in that coating, these are very less porous compared to the coating that I have shown earlier. Because here we are using the stainless steel, and in the stainless steel, chances for the release of toxic ions from the steel is very much
like there are more chances as compared to the titanium, because titanium is more biocompatible. But stainless steel based implants are very less biocompatible, and they can release the nickel and the chromium ions, which are actually carcinogenic and can cause the allergy. So these coatings are quite robust and can prevent the leaching of the ions. And I will show you the very simple test about the adhesion. We can make this coating on the 3D surfaces. These are the images from the 2D, but we can develop these coatings on the 3D implants. This is the real beauty of the process of electrofractal deposition, that we can coat on any sort of implants. So here we can see that we are bending the coating, and the still coating is not being delaminated. So it means that these coatings are quite well attached to the surface. I am every time showing the different result for the adhesion, so that you are aware that there are multiple options available. But we have surely done all the tests on each sample. So I'm just wearing the test of adhesion, so that you know that there are many very simple tests that you can do in your lab, or even in the clinic when you are using the implant, that you can really bend that, and you can see that if the coating is being delaminated or not. And again, we have used that peak as a for example control, as a negative control, and we can see that our coatings are really inhibiting the growth of gram positive bacteria in that case. Again, these are electrochemical results to show that our material is inhibiting the corrosion and preventing the leaching of the ions from the substrate, which in that case is stainless steel. This is a publication basically focusing on the wear resistance. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि यूजुअली जो वियर टेस्ट किया जाता है ना हमारे यहाँ, वो यूजुअली ड्राई एनवायरनमेंट में किया जाता है. तो फॉर एग्जांपल इन दैट केस, व्हेन वी कोट अ पीक एंड देन डू अ वियर टेस्ट का मतलब ये है कि वी यूज अ पिन ऑन डिस्क मेथड. वी टेक अ पिन ऑफ स्टेनलेस स्टील and we make it move on the coated substrate, and we can see that if load is 10 Newton, some of the coating will delaminate and the wear debris will produce. If the wear debris are being produced, it means that material is not wear resistant. But एक्सक्यूज मी सर. usually the materials एक्सक्यूज मी सर. qualify. जी. सर ये आप टेस्ट जो कह रहे हैं वो आप मतलब आप हैंड मैनुअली करते हैं? नहीं, मैनुअली नहीं करते. ये बेसिकली एक वियर ट्राइबोमीटर होता है जिसे बोलते हैं. ट्राइबोमीटर इज अ अच्छा डिवाइस अच्छा, which ट्राइबल. applied a specific load. It has a pin of a specific dimensions, and then it applied a load, and our sample is rotating. For example, if it moves around 750 meter is usually considered as the standard, because it is expected that an implant will move in 10 years around 750 meters. क्योंकि यूजुअली आपको पता ही है ये मिलीमीटर्स में होते हैं. तो 750 meters is quite a huge distance. अगर उस इम्प्लांट को मूव कराया जाए ऑलमोस्ट 1 kilometer. तो we test that सही. material to 750 meters to really check that if it is wearing or not. So under dry conditions, it usually qualifies. But if we put, for example, human saliva or the physiological medium or physiological solution on the surface of a sample, we see that no, the coating is chipping off or the wear is happening. So the more relevant test for the wear is to conduct under a wet condition, not under the dry condition. सर But most डायनामिक of the कंडीशन में. literature, जी, अंडर वेट कंडीशन होना चाहिए, ड्राई में नहीं होना चाहिए. यूजुअली जो लिटरेचर रिपोर्ट करता है वो ड्राई कंडीशन में कर रहा है. 90% ऑफ द लिटरेचर एंड द रिसर्च reports under dry condition. But here, almost for the like maybe there are very minimum number of articles that do the test under the um, wet condition as well as under dry conditions to see. And we also conduct that corrosion or this leaching test after the wear test. कि अगर हम इसको 750 मीटर की का डिस्टेंस ट्रेवल करवा दें इम्प्लांट को, और उसके बाद दोबारा कोरोजन टेस्ट करते हैं, तो ताकि पता चल सके कि अब तो कोई आयन लीच नहीं हो रहा स्टील से,
अब तो कोई रास्ता नहीं बन गया कि जो फिजियोलॉजिकल मीडिया है वो सबस्ट्रेट तक पहुंच तो नहीं गया। तो ये इस तरह हम सर काउंटर चेक कर रहे हैं। जी जी। सर इसमें टाइम का भी है, टाइम ड्यूरेशन का भी है कि इतने टाइम तक एक्सपोजर होगा तो वियर होना स्टार्ट जी होगा या इस तरह? बिल्कुल। फॉर एग्जांपल देखे ना कि यूजली वी टेस्ट इट फॉर 7 to 14 days, लेकिन एक्चुअली जो ये पोटेंशियल है ये रेप्लिकेट करता है ईयर्स को। क्योंकि अगर नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो वहां पर वोल्टेजेस मैंने आपको बताया बड़े लो हैं और मूवमेंट भी बड़ी कम है। तो ऑलमोस्ट दिस टेस्ट इज वैलिड फॉर 10 years ऑफ इम्प्लांटेशन इन द सर्विस। क्योंकि हम हाई वोल्टेजेस पर उसको टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली एंड एट वेरी हाई लोड इन द वियर टेस्ट एंड अंडर अ कॉन्टिन्यूस। आप जैसे देखे गाड़ी का टायर घूम रहा है तो क्या इतना डिस्टेंस तो हमारा इम्प्लांट अगर रोटेट भी करे स्क्रू तो वो मूव नहीं कर पाएगा। तो वी टेक इट टू 750 meters विच इज क्वाइट लॉट ऑफ डिस्टेंस। और वो रिसर्च से पता चलता है इतना इम्प्लांट एक स्क्रू मूव करता है ओवर द 10 years। तो दिस इज क्वाइट ए गुड नंबर टू टेस्ट, क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्टेड ASTM स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द ग्लोब दिस टेस्ट। ओके सर। पर ये बड़े यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दैट वियर टेस्ट शुड बी डन अंडर द wet condition as well, not only dry condition are not sufficient to qualify the material for the in vivo or the clinical applications। ये आखिरी है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। इस केस में हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दी है। वी हैव यूज्ड टेंटलम ओनली। यूजुअली मेटल्स को और सेरामिक्स को प्रिंट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर में यूजुअली ऐसे ऑक्साइड्स बन जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो इफ वी print tantalum oxide at a room temperature, this is huge, मतलब ये is a huge success। तो we uses carboxylated methylated cellulose just to disperse the particles of tantalum oxide. This tantalum oxide is an emerging material because if we make a scaffold from this tantalum oxide, it will have exactly same mechanical properties as of cortical bone. We do not need to do anything. This will just give same mechanical properties. It has very good bone regeneration tendency as well. It promotes alkaline phosphatase activity. So by using only single material, we can achieve multiple functionalities. So in my opinion, this is really good work. This is also being reviewed in Materials and Design, very famous journal. And we have got good, encouraging, positive comments. We are working on the revisions of this paper nowadays. So if we use CMCs and then we put our tantalum oxide, and then we can print that material at room temperature and make the scaffolds. And you can see here the strength of 96 megapascal. This is quite good for the bone, specifically for the cortical bone. This is quite a very good, in my opinion, very good yield strength for a material, and I think it's ready for cortical bone implantation. And there are multiple tests, as you can see here. Very different geometries are being formed. Not a good ink fidelity, not a good printing scaffold. This scaffold is not a good one, and this one is actually the best that we have achieved. Still, we can say that this is almost 50% similar as of design, but almost like a bone. In case of bone, there's a very less symmetry. In case of a bone, there is like porosity, and this porosity is not evenly distributed. So actually, if we get a different levels of porosity, this is more sort of mimicking and closer to the bone scaffold. So when we do the scanning electron microscopy analysis, you can see here these very nice 3D printed structures. And you can see here the cell viability of the osteoblast cells. These tantalum scaffolds have shown even in the unsintered stage, means if we do not sinter them, we do not heat them, they have a very good viability. It means that we can use these tantalum scaffolds for the bone regeneration application. In my opinion, this is a good result, and surely we can carry forward this groundbreaking work to develop more robust scaffolds at a room temperature
3D printing by using direct ink writing. Very simple process, very less cost effective, very less costly. So it is really cost effective technique in my opinion. These are some of the like ANSYS and modeling and simulation work that we have done on that to really check the porosity is comparable. We take a sample of a bone and check the porosity in that, and we take a sample of that 3D printed scaffold and compare the physical features of the bone with that 3D printed scaffold, and we see a very good comparison, almost 70% similarity. Obviously, there's a room for the improvement in future we can do, and we can really try to replicate the same porosity, same hierarchy as in the cortical bone. And we continue that work and try to achieve the better results for that applications. So these are the silk sutures. As you see, there are in every case there's a wound, we need to stitch it, and in surgical intervention there we need to stitch, and we have developed these silk sutures, and these I will just go to the sutures, and these sutures can really promote the wound healing. Again, this is Bioglass, and these sutures I will show you directly the result of animal trials. You can see here at day 4, in case of a coated suture, there is no wound. We remove that suture, and the rat is quite good here. And after day 7, if we use a normal uncoated silk suture from the market, you still see points of the marks on the surface. So it means that if we use a silk suture coated with this bioactive glass, it really helps in the wound healing, and the regeneration potential exists. Recently, we have done animal test from the Parkastria Focke for the another composition of bioglass, and here we see after day 1 there is a complete healing, even in 24 hours. So we will later on also publish that results, but we use a silver and cobalt together to get that really active combination of the ions that synergistically promote the wound healing. So this is also, in my opinion, a good work. And in the last, there are two emerging materials in the field of orthopedic and dental implant. One is magnesium, other is PEEK. PEEK in combination with carbon fibers, PEEK in combination with glass fibers, even with graphene, can really make a different variety of implants, which will be a future in my opinion. And other one is magnesium. As you know that magnesium-based implants are biodegradable. You do not need a second surgery. They prevent revisionary surgery. So if we are using magnesium, and we can coat the magnesium implants to control their degradation, we can actually very close to get that implants which we do not need a revisionary surgery. Magnesium has elastic modulus close to the bone. It has very good mechanical properties. If magnesium degrades slowly, the degraded magnesium will be good for the personal health also. But the currently from the literature, it is shown that degradation rate of magnesium is very fast, and the excessive release of magnesium is causing a problem to the liver as well. So this is the results from the animal trials. We have also developed coatings on magnesium, and in 2025 we reported the lowest corrosion current density, means that we have controlled the degradation rate best compared to the literature. And we reported these results in that paper, where we controlled the degradation rate of magnesium Az31Li by using the coatings, and our results were really encouraging. So, but still, they are far away for the clinical translation. We need to improve further to get them to the clinic. So this work is also being continued. So that's all from my side. This is the whole research that I presented in today's lecture is from my own laboratory. So I hope if you have any questions, and I will be able to help you with the real translational application as well.
Thank you for शुक्रिया शुक्रिया the जज़ाकल्लाह थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम इतनी रात को आफ्टर वर्क fascinating results fascinating research I'm sure के जो हमारी audience है they have they've got lots of questions in their mind और मेरे पास भी I've written down a few questions और it's so exciting to see कि Bioglass has got such a big impact and it's on health. Hamara concern as a clinician, we are really looking at Bioglass for remineralization strategies or remineralizing, Yes. as in um, using them as remineralizing agents for denting. And we are looking at that front. There is a question by Dr. Iram, please. सर जी जी ये बायो एक्टिव जो है फिर ये ओस्टियोपोरोसिस जो बोन होती हैं या मतलब बहुत ज्यादा जो पोरस बोन्स हैं तो उसके लिए भी है बेनिफिशियल बहुत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक रेसिपी है इसकी, नोवा बोन के नाम से, जो पर्टिकुलरली इसी डिजीज के लिए है, और उसके वो ऑलरेडी कमर्शियली अवेलेबल है। नोवाबॉन के नाम से यूरोप में बड़ा इजीली अवेलेबल है, और ये सॉर्ट ऑफ जेल है और इंजेक्टेबल है, और ये ट्रीट करती है और बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करती है। And Iram, we haven't gone through bioglass synthesis on its own, but the synthesis का सबसे बहुत common है, it's a sol gel process होता है इसका। वैसे भी बहुत सारे process हैं, microwave भी है, बहुत है, लेकिन सबसे simple process sol gel, and there is no rocket science to synthesize bioglass, or relatively it's a very simple process. But हाँ, जब आप functionalization and जब आप coatings, and when you talk about say strontium based and mesoporous particles that adds a little chemical aspect otherwise sol gel process है इसका synthesize करने का ना so मेरा process है when you use copper and silver together तो what concentrations did आपको ऐसा लगा था कि that worked that give positive results क्या 50-50 किया था यस क्या सर, यूजुअली 1 मोल% इसमें सिल्वर डोप किया जाता है, एंड द कॉपर डोपिंग इज 3 मोल%, ओके ओके एंड रेस्ट इज 70% सिलिका है, और अराउंड 26% इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है। सही है तो इस पे हमें बड़े बेहतरीन यानी कि अच्छा रिजल्ट्स मिलते हाँ, हैं। ये हमने पहले पूरा यानी कि डिफरेंट रेसिपीज बनाई कॉपर सिल्वर की, जी जी और फिर इनको गुजारा इन विट्रो टेस्टिंग से। तो उसके बाद इवन इन विवो कैम्प से भी, तो फिर उसके बाद ये पता चला कि ये कॉम्पोजिशन बेहतर है। तो फिर इसी पे एनिमल ट्रायल के रिजल्ट भी अच्छे आए। हम्म बल्कि हमने फिर एनिमल ट्रायल भी डिफरेंट कॉम्पोजिशंस पे किए हैं, 5 मोल% ऑफ कॉपर पे भी किए हैं, 7 पे भी किए हैं। लेकिन 7 पे फॉर श्योर है वो एंजियोजेनेसिटी तो प्रमोट करता है, बट दे बिकम टॉक्सिक। हम्म हमने डिफरेंट मार्कर्स की अप रेगुलेशन करनी है, लेकिन वहां पर हमें मिल रहा है कि जी वीजीएफ तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो भी राइज हो गए हैं साथ। तो वो फिर वहां पर उसका कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सी कंपोजिशन है जिस पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। सर स्ट्रॉन्शियम पे आपने काम किया है और इतने सारे कॉपर सिल्वर व्हाट डू यू थिंक अबाउट नायोबियम बेस्ड बायोग्लास उसका क्या पोटेंशियल है और क्या उसका स्कोप है व्हाट डू यू थिंक बिल्कुल, सब इमर्जिंग मटेरियल है, और बड़ा जबरदस्त है। फॉर एग्जांपल लैंथेनम, नियोबियम रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से हैं, और एंड दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर डूइंग वंडर्स। यानी कि मैं आपको एक सिंपल, हमारे चाइनीज कोलैबोरेटर है, उसने रिसेंटली लैंथेनम को डोप किया, और उसने ये देखा कि यूजुअली जैसे ऑर्थोपेडिक्स में क्या होता है कि एक पेशेंट गिर गया है, तो पहले उसकी स्वेलिंग होगी, वो डॉक्टर अलाउ करता है कि अब इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन्फ्लेमेशन जब एक ऑप्टिमम पॉइंट पे रीच करने के बाद डिक्रीज करना शुरू करती है, तो फिर बॉडी का जो एंटीबैक्टीरियल रिस्पांस शुरू होता है। तो उसने ये किया कि अगर मैं फौरन ही उसको बायोएक्टिव ग्लास डोप विद लैंथेनम इंजेक्ट कर दूं, तो उसने उसका जो रिस्पांस था इन्फ्लेमेटरी से, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी कर दिया, और साथ ही एंटीबैक्टीरियल कर दिया। तो विद इन 12 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट और एक्सीडेंट, तो वो पेशेंट की इन्फ्लेमेशन वगैरह रिड्यूस होगी, और पेशेंट रेडी है फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन अब। यानी कि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन उसकी कोई इंटरवेंशन करना चाहे तो वो कर सकता है, और वही जो बोन का टिपिकल ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर है वो किया जा सकता है
फ्रैक्चर प्लेट्स का, बोन स्क्रूज लगाने का। तो मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त है ये। सही है। इनको अभी समझ नहीं है कि ये करते क्या है, मैकेनिज्म का पता नहीं हम्म चला अभी तक। हम्म दिस रेयर नियोबियम है, लैंथनम है, स्कैंडियम है। हम्म, तो इनके बड़े पॉजिटिव और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। सही है। इरम, आई विल लेट यू आस्क द लास्ट क्वेश्चंस ताकि फिर हम रैप अप सॉरी करें, सर। प्लीज। हाँ हाँ, पूछ। सर मैं ये कह रही थी कि अभी सर ने कहा कि वो वेट करते हैं कि इन्फ्लामेशन और बढ़ जाए। तो क्यों वेट करते हैं कि इन्फ्लामेशन बढ़ जाए तो उसके बाद ही हम उसको जो है वो करेंगे, पहले ही क्यों नहीं कर लेते? मतलब स्वेलिंग अभी स्टार्ट हुई है तो आप तब भी कर लें। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर अगर पेशेंट ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, अगर हम उसमें वेट कर रहे हैं कि और इन्फ्लामेशन बढ़ जाए तो वो काम खराब नहीं हो जाएगा? देखिए यूजुअली तो वैसे ये क्लिनिशियन का सवाल है, लेकिन जो हम्म मेरा इसके बारे में नॉलेज है वो यही है। देखें, जैसे कोई ट्रामा है, फॉर एग्जांपल पेशेंट गिरता है एक मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में या गाड़ी से इंजरी होती है, तो उसको फौरी तौर पर इवन एमआरआई नहीं करते फौरी तौर पर। तो पहली स्ट्रेटेजी क्या होती है, और जितने भी ऑर्थोपेडिक्स में, वो ये होती है कि पहले स्वेलिंग को रिड्यूस किया जाए। क्योंकि अगर स्वेलिंग रिड्यूस नहीं होगी तो उसका जो आप सर्जिकल इंटरवेंशन करने जा रहे हैं उसके सक्सेस के चांसेस बड़े कम है। क्योंकि अभी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे ना बॉडी को, जहां तक मेरा समझ है। सारी बात है, इस पे क्लिनिशियन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं करते। यूजुअली 48 आवर्स वेट करते हैं। आप जितने भी ऑर्थोपेडिक सेक्टर में चले जाए ना, तो वो क्या करते हैं, पहले उसकी इन्फ्लेमेशन ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं, उसकी पेन को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल में एक ट्रामा से गुजर रहा है, तो उसको एक सर्जरी का ट्रामा शायद उसके लिए टू मच हो, और इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन में एग्जैक्टली वहां तक पहुंचना और वो प्रोसेस करना मे बी डिफिकल्ट हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसके बारे में मैं 100% आंसर नहीं कर पाऊंगा। Yeah, I'm sure this is, I think when initially inflammation happened, whatever the results that the group has shown, we don't know whether, मुझे नहीं पता कि whether they are clinical or whether they're in vitro results. So, जी lanthanum is such a fascinating new material कि कि I don't know whether clinical testing पे हैं. Usually in vitro results होते हैं जो पे हमारे पास आते हैं. Then we can translate and relate them कि उसमें इन्फ्लेमेशन मॉड्यूलेट हुई है कि नहीं। सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आवर टाइम and showing your results, data, and the work that your lab has done and your collaborators' work. We are also open for collaboration. हम लोग का भी जी and बिल्कुल सर। these are emerging new students and with different background and thank you once again, sir. बहुत बहुत शुक्रिया and we would like to applause के बहुत बहुत शुक्रिया and थैंक यू सर। inshallah we'll stay in touch together for जी more सर projects and इंशाल्लाह। research. थैंक यू सर, थैंक यू। इंशाल्लाह वी विल स्टे इन कांटेक्ट। थैंक यू सर। Thank you. Thank अल्लाह you. हाफिज, अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz. Allah Hafiz. All right, thank you, Iram, Maliha, and Wakas. Iram, you have another question? सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरे हाँ हाँ, जहन में आ पूछे रहा पूछे। था। मैं ये पूछ रही थी सर, अब आप डिस्कस कर रहे थे सर से कि वो जो कोटिंग करते हम्म हैं परसेंटेज पूछ रहे थे आप। अब अगर सर इन कोटिंग की जो है वो जैसे अगर हम इम्प्लांट लगाते हैं, हम्म ये टाइटेनियम इम्प्लांट, अगर वो हम्म कंटेमिनेट हो जाते हैं तो इनिशियल स्टेज पे हम उसकी डिकंटेमिनेशन करते हैं। तो इनका भी वही प्रोसेस है या इनको डिकंटेमिनेट करने का कोई और प्रोसेस है अगर ये वाली कोटिंग हमने की हुई? I don't know. I don't ओके know. How do you ठीक। decontaminate commercial implants? सर जो इम्प्लांट वाली है ना मिश जो पड़ी है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपका इनिशियल स्टेज है तो आप अगर ऑलरेडी कोटेड है, पहले तो हम ये उसको देखेंगे कि वो कोटेड है कि नहीं। अगर वो कोटेड है तो उसका कलर चेंज हो जाता है और फिर हम सिट्रिक एसिड से उसको क्लीन करते हैं। Mhm. तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि हाँ, इस okay. अगर ये कोटिंग हाँ हाँ होगी हाँ तो हाँ, क्या I'm sure. उनको भी हम ऐसे ही? I'm sure कि if you do it clinically and अगर clinically you apply it तो in vitro lab based जो testing हो रही होती है, what concentration of citric acid is it? अब सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट मैं सही देख के फिर मैं इंशाल्लाह है, शेयर कर सही है, दूंगी। सही है। तो आई थिंक इन विट्रो लैब के लिए भी इफ देयर इज एनी कंटामिनेशन, आई एम श्योर they could use an acid at
at a very strong pH to remove any contaminants on it. मुझे नहीं लगता कि it would drastically change the coating or it would wash away, because coating की तो टेस्टिंग उन्होंने की है, वेयर टेस्टिंग की हुई है, डिलैमिनेशन टेस्टिंग कर रहे थे उसकी, और उसके मैकेनिकल टेस्टिंग कर रहे थे। तो और जब कोटिंग मैकेनिकली इतना स्ट्रांग और इंटैक्ट है, तो I'm wondering कि क्या डज इट पील ऑफ या डीलैमिनेट हो जाती है इतनी टेस्टिंग के बाद, तो वो रिजल्ट्स होते हैं। और अगर हो जाती है तो उसको उसको आप सिट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं कि नहीं? आई कैन आस्क हिम दिस, मुझे नहीं पता। सर 40% है, मैंने गूगल किया अभी। ओह दैट्स स्ट्रांग। 40% सेफ्टी टेस्ट। वाओ दैट्स वेरी स्ट्रांग। वाओ दैट्स वेरी स्ट्रांग। आई थॉट थोड़ा लाइट होगा, बट आई थिंक जब इन विट्रो आप when whatever results you see in an in vitro project, you take it with a grain of salt। मतलब ये है कि आप उसको लें कि हाँ, उसको क्लिनिकली ट्रांसलेट कर सकते हैं आप, बट इट हैज टू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, कोटिंग्स आर वेरी फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग, बट यस दे कैन बी डिलैमिनेशन हो सकती है, बट द रिजल्ट्स डॉक्टर अतीक ने दिखाए हैं, दे आर फैसिनेटिंग। आई मीन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वेयर वेयर टेस्टिंग की हुई थी उन्होंने विद सिम्युलेटेड बॉडी फ्लूइड। तो उसके अंदर सिमुलेटेड बॉडी फ्लूइड विच इज वेरी सिमिलर टू प्लाज्मा, एक्चुअली एंड बायोग्लास के लिए यूज होता है टू स्टडी द कार्बोनेटेड एपेटाइट फॉर्मेशन। तो आई थिंक दे कुड यूज मे बी a more diluted version of it. I have to ask him. I don't know about that. सही है? थैंक यू सर। ओके सर। Okay. ओके चलिए, सर। thank you. This is सॉरी सर, recorded. आज This is, हाँ बोलिए। सर मुझे लग रहा है आज मैंने कुछ ज्यादा डिस्टर्ब किया, क्योंकि मुझे टॉपिक समझ आ रहा था और मैंने ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इम्प्लांट, तो इसलिए मैं एक्सेलेंट शायद एक्सेलेंट। अभी भी मुझे कुछ प्लीज, आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजन हैं अभी तो भी यू है। कैन ऑलवेज ईमेल मी। इफ आई कैन एक्सप्लेन यू, मैं कर सकता हूँ। आई कैन फॉरवर्ड इट टू हिम, ठीक है या सर। मैं बता दूंगा। दिस इज अ वेरी, बायोमेटेरियल्स अ वेरी fascinating field, and implants are still evolving। तो और डॉक्टर अतीक के अलावा, डॉक्टर अतीक तो इस्लामाबाद में है, लाहौर में कॉमसैट्स हैं वहाँ पे। अभी तो मैंने the one जो मेरी कोलैबोरेटर हैं डॉक्टर अस्मा तुफैल, उनको नहीं मैंने इनवाइट किया है। तो इफ आई इनवाइट हर, वहाँ तो कमर्शलाइजेशन वगैरह भी हो रही है। वहाँ पे इनफैक्ट स्किन ग्राफ्ट्स कमर्शलाइज किए गए हैं इन कॉमसैट्स लाहौर। तो वहाँ के जो डॉक्टर यार हैं, हु हैज कमर्शलाइज इट, ही इज माय कोलैबोरेटर एज वेल। स्किन ग्राफ्ट्स के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला, उसका नाम है काइटोग्राफ्ट। तो पाकिस्तान में वो बर्न्स के लिए यूज हो रहा है, क्लिनिकल टेस्टिंग क्लियर करके या सारा कुछ, एंड वो बर्न्स पेशेंट्स पे यूज होता है। तो there's a lot of। सर हाँ एक और क्वेश्चन है। हाँ अभी आपने कहा ये बर्न पेशेंट पे यूज करते हैं, तो अगर जी। बर्न पेशेंट एंटीबायोटिक पे है, हम्म। मतलब जाहिर सी बात है वो बर्न पेशेंट को देते हैं ना हम एंटीबायोटिक्स, तो वो क्या हम्म। उस पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा? और एक देखिए, दो क्वेश्चन और भी थे मेरे मोस्ट ऑफ साथ। द मोस्ट ऑफ द स्कैफोल्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग बर्न्स, जो काइटोग्राफ जो इन्होंने बनाया ना, इट्स मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अ काइटोसान, और उसके अंदर सिल्वर आई थिंक डोप किया है। तो काइट एंड इवन इफ यू go, silver has got a very strong antimicrobial potential, and specifically on burn, even second degree burn तक के लिए, if you just put silver sulfazidine, I think that's the sulfur sulfazidine, that's the compound, अगर आप वो लगाएं, अटैच करें, तो that has got a very strong healing capability। तो if it's a matter of saving the patient's life, तो मेरा ख्याल है कि these graphs, they have shown very good clinical results। ओके सर। हाँ, ओके। और ठीक है। ask anything। सर एक चीज और है। हाँ। अब ये सर ठीक है, वो उसके लिए बर्न के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो क्या ये फिर अल्टीमेटली सर ने कहा था ना कि वो